Hello friends, this is Kashyap Tutorials and myself Prabhakar Acharya. Friends, we have started discussion on about samas and I already explained you about samas and its types. So now we are going to start the first type, that is Dvandva samas. And also I have collected I have taken all the important words, all samas words from 10th standard textbooks. So you will get all the words together here on this channel, and it will help you to prepare samas and understand this one. So please listen carefully, practice this one, and also subscribe this channel and watch it properly. So let's start with Dvandva Samas. What is Dvandva Samas? And what are the types? So Dvandva Samas explanation already given. Now we are going to see its types. इसके प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. द्वंद्व समास आर ऑफ टू टाइप्स. द्वंद्व समास के दो प्रकार है. इतरेतर द्वंद्व and samahara dvandva. Remember, it's a spelling dvandva. So iterator dvandva is first type and samahar dvandva is second type that you have already studied in ninth standard. Now see iterator द्वंद्व समास डिस्क्रिप्शन, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम देखते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास किसे कहते हैं. इतर इतर दो वर्ड से मिला हुआ इतरेतर बना हुआ, इतर अधिक इतर, और ये गुण संधि के टाइप है इतरेतर. सो टू डिफरेंट थिंग्स कम टुगेदर, दो अलग अलग वर्ड एक साथ में आते हैं. सो इट इज कॉल्ड इतरेतर द्वंद्व समास. सेकंड, द्वंद्व इज ग्रुप ऑफ टू और मोर. कम से कम दो शब्द होने चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. सेकंड, our next point is both components are important. द्वंद्व का मतलब ही होता है इक्वल. इक्वल, सो ऐसा मीन्स दो कंपोनेंट्स होता है. मीन्स यू हैव सीन दैट इन द फर्स्ट वीडियो कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद. सो इसमें दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. बोथ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, दिस कंपाउंड नेवर बी इन सिंगुलर. दिस कंपाउंड कैन नेवर बी इन सिंगुलर. ये समास कभी भी एक वचन में नहीं हो सकता. आइदर इट शुड बी इन द्विवचन और बहुवचन. नेक्स्ट, it is always dual or plural, that I already told you कि ये हमेशा या तो द्विवचन में होगा या फिर बहुवचन में. Next, gender of the compound is decided by the gender of the second component. Means suppose we are making a compound word, so वो किसी न किसी gender में तो होगा ही. Suppose I am talking Ram, तो Ram is pulling. If I am talking about Mala, Mala is stealing. So संस्कृत के जितने भी शब्द है वो किसी न किसी जेंडर में होता ही है. तो कंपाउंड भी किसी न किसी जेंडर में होगा ही. तो इतरेतर द्वंद्व समास के का कौन सा जेंडर आएगा, ये समास किस जेंडर में जाएगा, ये डिपेंड करता है सेकंड कंपोनेंट पे. मींस उत्तर पद के जेंडर के ऊपर इसका समास डिपेंड करता है. नेक्स्ट, now see dissolution. Dissolution is called in Sanskrit vigraha. Means in the paper you are getting three parts in a box. First is Samastapadam, means compound word. जैसे राम लक्ष्मणो, this is called Samastapadam. Third, second part is Vigraha, which is called dissolution in English. Vigraha karna, Ramah cha, Lakshmanah cha. This is called Vigraha. And the third part, that last part is Samastapadanam, means compound का नाम क्या है. So now we'll see dissolution. So Vigraha, each component in nominative case. While we are going to do vigraha, जब हम दोनों को अलग करेंगे तो दोनों कंपोनेंट में पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रथमा में होना चाहिए. Next, it is followed by indeclinable cha. Means after each word cha definitely will be added. Means cha will come. Means हर एक component के बाद cha आना चाहिए. Suppose I am talking about Ram Lakshmano, तो रामः च लक्ष्मणः च. आई होप यू गॉट दिस वर्ड. कैसे होगा, रामः च और लक्ष्मण, तो हर एक वर्ड के बाद में च आएगा. नेक्स्ट, each word has its own fixed gender. What is the meaning of this word? Its meaning is, suppose I am
taking the word Rama Site. So Ram is pulling, तो Ramah cha, and Sita is stealing, so it becomes Sita cha. तो ये अपने अपने जेंडर में ही आएगा when we are going to do विग्रह. Next, number is dependent on the quantity. Means ये एक द्विवचन होगा या बहुवचन होगा, it depends on the quantity of the word कि दो word है या दो से ज्यादा है. If it is two word, then it becomes dual form द्विवचन. If more than two, then it becomes बहुवचन. Now see the examples. Few examples are given here. Proper noun. Proper noun. Just you can see singular. Ramah, Krishna. So Ramah is proper noun. Krishna is proper noun. So more etc. words. Collective noun will be singular. Collective noun भी आएगा, वो भी singular में रहेगा. जैसे अन्नम, जलम, etc. ये collective noun हो गया. And things always in bulk plural. जो things है वो हमेशा प्लूरल में ही आएगा. नाउन, pronoun, noun and collective noun should be in singular number, but things, जब हम लोग things को इतरेतर द्वंद समास का पार्ट बनाते हैं तो that will be always in plural number. Example you can see लोकाहा वस्त्राणि. लोकाहा means people, we can't say लोका, it is लोकाहा. लोक कहने से हमें से प्लूरल का ही हमें आभास होता है, हमें ज्ञान होता है. सो इट इज लोकाहा. एंड सिमिलरली वस्त्राणि, क्लोथ्स. सो ये बहुवचन में होगा. Now, I'll take another part, that is Samahar Dvand Samas. Iterator Dvand Samas, you understood? Now see Samahar Dvandva Samas. Actually, in 10th standard, there are no Samahar Dvand Samas examples given. But we'll see the examples. We'll see the it's a definite description and definition, 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 and it's a dissolution. So description. Samahar is a group or unit. Samahar means किसी चीज का group या unit. Next, born enemies, small insects, instruments, body parts, parts of the army will be indicated by samahar dvandva. Means samahar द्वंद्व समास में कौन कौन से वर्ड आएंगे? वो है born enemy, जो जन्मजात ही शत्रु होते हैं, जन्म से ही पैदाइश शत्रु होते हैं, जैसे lion and deer. स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे इंसेक्ट्स जो जीव होते हैं, जैसे बाल में पाए जाने वाले एसेट्रा. सो स्मॉल इंसेक्ट्स. इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्रा, ये इंस्ट्रूमेंट्स. बॉडी पार्ट्स, हस्त हस्तपादपम. देन पार्ट्स ऑफ आर्मी जो राजा के समय में युद्ध होता था तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लेते थे, वहां पे कंट्रीब्यूट करते थे, जैसे एलिफेंट्स हो गया, इसके बाद हॉर्सेस हो गए, ये पार्ट्स होते. तो ये सब समाहार द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स, ये समाहार द्वंद्व कहा जाता है इन शब्दों को. नाउ सी दैट वन मोर. ऑलवेज न्यूट्रल नॉमिनेटिव सिंगुलर. So this compound is permanently, you can say compulsory in neutral gender and nominative singular. Means नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन ही हमेशा होगा irrespect of iterator द्वंद समास. Iterator द्वंद समास is either in द्विवचन and बहुवचन, and samas gender depends on the last word's gender. But samahar द्वंद समास is permanently nominative. प्रथमा एक वचन, नॉमिनेटिव कहते हैं प्रथमा को, तो प्रथमा एक वचन और वो भी नपुंसकलिंग. इट कैन नॉट बी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द. नेक्स्ट, रिजोल्यूशन, विग्रह. विग्रह, two component in nominative case. टू कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट्स विल बी इन नॉमिनेटिव केस. जब हम इसको विग्रह करेंगे तो दोनों नॉमिनेटिव में आएगा, जैसे इतरेतर में आता है. आफ्टर ईच कंपोनेंट च will be added. Means a cha after every word cha will be added, just like iterator dvand samas. Next, uh, use a third genitive case to indicate group of these two, means dual of all these plural. Etyoho samahara, that is dual etyesham or etasam samahara. Now see that एतर इज टेबल. ये क्या करता है? ये रिलेशन बताता है कि ये कौन सी विभक्ति में है और कौन सा. तो जेनिटिव, जेनिटिव कहते हैं
षष्ठी विभक्ति को। सो एतत् का षष्ठी विभक्ति फॉर्म आएगा और वो इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ दिस टू, ये दोनों का ग्रुप। तो आइदर ये द्विवचन में होना चाहिए और ये बहुवचन में होना चाहिए। तो द्विवचन में होगा, इफ इट इज इन द्विवचन देन देर इज नो एनी जेंडर बेसिस डिफरेंट फॉर्म। एतयोः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग ये तीनों में यूज होता है। बट व्हेन इट इज बहुवचन, एतेषाम, etesham is bahuvachan form. So plural form. You can see here plural form. So etesham is pulling shab or neuter नपुंसकलिंग शब्द, but etasam is स्त्रीलिंग शब्द। तो शब्द के लास्ट वर्ड के जेंडर पे हमें देखना होगा कि जब डिजोल्यूशन करते हैं तो लास्ट वर्ड में कौन सा जेंडर है। if it is feminine then etesham in बहुवचन, अगर द्विवचन है तो देर whether it is masculine feminine or neuter एतियों ही यूज करना है, हमें प्रयोग करना है। but when the last word is neuter or masculine then etesham, if the last word is feminine then it become etasam। तो एतयोः एतेषाम और एतासाम समाहार, that is the different part difference between इतरेतर द्वंद समास and समाहार द्वंद समास। Now we'll see next part. Examples are given here. You see examples specially taken from ninth standard textbook. Ahin kulam, ahi nakulam, ahi cha nakulah cha etayoho samahara। See, ahi is ekvachan पुलिंग, नकुला इज ऑल्सो पुलिंग एक वचन। सो ये दो हुआ और पुलिंग शब्द है तो इसीलिए एतयो हो और समाहार, बिकॉज देर आर टू ग्रुप ऑफ स्नेक एंड mongoose मीन्स स्नेक, अही मीन्स स्नेक एंड mongoose को नकुल कहा जाता है। तो दीज आर बॉर्न एनिमी, जनजाति एक दूसरे के शत्रु होते हैं। Next example is Pani Padam, body parts. Pani means both the hands and Pado means both the legs. So ये हमेशा जब विग्रह करेंगे तो हम द्विवचन में ही लेंगे, बट प्रथमा, पानी इज प्रथमा द्विवचन फॉर्म, just like कवि कवि कवय सिमिलरली। तो पानी पानी पाणय, तो पानी इज द्विवचन बिकॉज वी हैव टू हैंड्स एंड सिमिलरली टू लेग्स। सो पाद इज अकारांत पुल्लिंग शब्द लाइक देव, तो देवः देवो, तो पादो। So pani pado cha etesham samahara. So group of hands and legs. So these are body parts. So आप देख सकते हो born enemies and body parts. Because of that, the samas word is, even though there are groups of two to more than two words, then the samas is in ekvachan. Ahi nakulam napunsakling prathama ekvachan. Pani padam prathama ekvachan of napunsakling. So ये इसका examples है। Now we'll see what are the samas in 10th standard. So I have taken, because there is no any examples given of samahar dvand samas in 10th standard. So just itarita dvand samas are there. So all itarita dvand samas I have taken here. Just see that, prepare together, write, do also writing practice, learn it, understand it. Even though if you are feeling difficulty, you can ask me. So just see the examples. Murugasrugalo from chapter number 2. Mrugasrugalo. So Mrugahacha Srigalacha. Because you can see Mrugasrugalo is pulling द्विवचन, प्रथमा द्विवचन अकारांत शब्द की तरह। तो इसको विग्रह भी ऐसे ही करेंगे। अगर द्विवचन में समास है तो हमेशा जो कंपोनेंट होगा वो एक वचन में ही आएगा प्रथमा में। सो मृगः च श्रुगालः च। सो दिस इज इतरेतर द्वंद्व समास। हर एक वर्ड के बाद में आप देख सकते हो च च है। Then Nigharshana, Chedana, Tapa, Tada, Naihi. There are four words. So Nigharshanam, it is from Yugmamala. So Nigharshanam, Cha, because this is Napunsakling, ये proper gender में आएगा प्रथमा फॉर्म में। Nigharshanam Cha, Chedanam Cha, Tapah Cha, Tapah is also Napunsakling, तापा पुलिंग शब्द, तो तापः च एंड ताड़नम च। सो ये प्रॉपर जेंडर में आया और प्रथमा एक वचन। एंड आफ्टर ईच वर्ड यू कैन सी च, बट व्हाई इट इज तैहि, यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन तैहि क्यों ऐड किया यहाँ पे। बिकॉज द समास वर्ड इज इन तृतीया बहुवचन। निघर्षण छेदन ताप ताड़ने ही, सो देव ही तृतीया बहुवचन। जब भी समास वर्ड प्रथमा के अलावा किसी और विभक्ति में है तो थर्ड टेबल का प्रयोग करना है हमें वो विभक्ति दिखाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कि जब भी प्रथमा के अलावा कोई भी विभक्ति में समास रहेगा तो हम थर्ड टेबल का प्रयोग करेंगे
उस विभक्ति को दिखाने के लिए, उस विभक्ति को दर्शाने के लिए. सो ताड़नैहि. सो एंड दिस इज पुलिंग शब्द. सो पुलिंग और नपुंसकलिंग. सो तेन ताभ्याम तैहि. So तृतीया बहुवचन. So it is iterator dvand samas. So this is second from chapter Yugmala. Now Kavi Panditaha. Kavi Panditaha. This is from Vachan Prasansa. So Kavayah cha, because Kavi Panditaha is in Bahuvachan. So समास विग्रह भी ऐसे होगा प्रथमा. So कवि is कवि ही कवि कवय. So कवय is इकारांत शब्द प्रथमा बहुवचन. So कवयः च पंडिताः च. पंडिता is अकारांत देव शब्द like dev शब्द. So it is कवयः च पंडिताः च. So after each word you can see ch. This is another third example. Next one is dhana dhanya pushpa phalani. This is also from chapter number 1, that is Prithuvanya. So that from that chapter this word is taken, samas word. So dhanam cha, dhanyam cha, napunsakling. So dhanam cha, dhanyam cha, pushpani, because many flowers. So pushpani cha, phalani cha. So dhanam or dhanyam एक वचन ही लेना है. Dhanam cha, dhanyam cha, pushpani cha, phalani cha. Even I take bahuvachan forms, there is no any mistakes. But irrespectively, this is dhanam means wealth, dhanyam means crops, pushpani flowers, and phalani fruits. So after each word, choice is given. Now next part. Shukasarikaha. Again, samas, what is in Bahuvachan? So, Shukaha cha, Sarikaha cha. Shukaha means parrots. So, Shukaha is like Dev word, Devaha, Devo, Devaha. So, Shukaha cha, Sarikaha. Sarika is Akarant. स्त्रीलिंग शब्द माला माले माला. So, समास word भी स्त्रीलिंग हो गया. Shukaha cha, Sarikaha cha. Now see, next one. Vyagra Bhalluko. This is not born enemies. This is the two animals found in the forest. So Vyagra and Bhalluko, it is Dvivachan Samas, Prathama Dvivachan. So when Vigra dissolving form will be done, it will be Ek Vachan Prathama. So Vyagraha cha, Bhallukaha cha. Vyagraha cha and Bhallukaha cha. So these are Itarita Dvand Samas forms given in 10th standard textbook. So these are the Itarita Dvand Samas forms given in 10th standard textbook. Do practice. All the words are collected together and given here with the examples, with the vigraha vakyam dissolutions and with a name. So यही type में, यही format में आपको board में भी आएगा या school के paper में भी आएगा. So you prepare these words. Still if you are feeling any difficulty, you can take some message, you can ask me in comment box, and do revising, and please subscribe the channel. And so more and more exercise, Suchna Anusara, many more things will come. If you'll keep on subscribing, if you'll suggest your friend to subscribe this channel, definitely I'm going to do a lot on this channel. Thank you.